Fine. Today we are going to do New Gems English Reader by Ratna Sagar. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. This is the book we are doing right now. We are going to continue lesson 5, The Magic Pot from Katha Sarit Sagar. We have started this lesson. I have given you explanation. Now let's do the reference to the context of this chapter. What are the reference to context? When we take a line from the chapter and answer the following questions according to that line. Let's see. Read these sentences and answer the question. So sentence 1 is tonight we will send you to your wife in a dream. इस लाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसका आंसर लिखना है. Who said these words to whom? Yakshas said these words to Subhadatta the woodcutter. Why did they say these words? They said these words because they wanted to help Subhadatta. वो उसकी मदद करना चाहते थे. What else would happen in the dream? Yakshas will send Subhadatta in a dream of his wife tonight where he will tell her that he is fine working for Yakshas and next morning she will find money and clothes by her side. So उसे ड्रीम में भेजेंगे जहाँ वो उसको बताएगा कि मैं ठीक हूँ और मैं यक्षस के लिए वर्क कर रहा हूँ, यू डोंट वरी. और जब वो सुबह उठेगी उसके पास पैसे और कुछ कपड़े होंगे. Now next line for which you have to do question and answers. Let us have a feast for all the neighbors but don't tell them where the food comes from. इस line के कुछ questions हैं, उनको आपको answer करना है according to line. Who said these words to whom? किसने कहा? Subhadatta the woodcutter said these words to his family. और family में कौन था? Wife and children. So उनको ये line उसने बोली थी. Why do you think the speaker wanted to hold a feast? क्यों वो feast party क्यों देना चाहता था? I think the speaker wanted to hold a feast as he wanted to boast the pot to others and make them jealous. क्योंकि वो सबको show off करना चाहता था कि उसके पास एक magical pot है और ताकि वो सबको जला सके कि अब वो कुछ भी चीज़ को पा सकता है easily magically. Why didn't the speaker want the neighbors to know where the food had come from? क्यों नहीं चाहता था वो कि उसे पता चले उसके neighbors को कि खाना कहाँ से आया? The speaker didn't want the neighbors to come to know where the food had come from because he was worried that someone would steal it. So उसे डर था कि कोई चुरा कर ना ले जाए उसके magical pot को, इसलिए वो नहीं बताना चाहता था. Now we are going to do the question answers of this chapter. Answer these questions. Question 1. Who was Subhadatta and why did his legs tremble with fear? Subhadatta कौन था और उसकी टांगे क्यों कांप रही थी डर के मारे? Subhadatta is a poor woodcutter. His legs trembled with fear because he was worried if the yakshas got angry with him, they will curse him. सुभदत्ता एक पुअर वुड कटर था और उसकी टांगे इसलिए कांप रही थी डर से क्योंकि उसे डर था कि अगर यक्षस गुस्से में आ गए तो उसे कर्स कर देंगे, पनिश करेंगे, श्राप दे देंगे. What reward did he get from his hard work? उसे क्या रिवॉर्ड मिला अपना हार्डवर्क करने पर? Subhadatta got the magical pot from Yakshas as a reward for his hard work. तो उसके हार्ड वर्क के बदले में उसे मैजिकल pot as a reward, as a gift, as a prize मिला. Now question 3. What did Subhadatta do with the reward? Subhadatta drew out beautiful clothes and shining jewels
for his family, also threw a feast for neighbors in which he invited 100 guests. So उसने क्या किया इस रिवॉर्ड के साथ, इसमें से उसने सुंदर सुंदर कपड़े और चमकती हुई ज्वेलरी निकाल कर अपनी फैमिली को दी और उसने 100 पीपल के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें उसने बहुत अच्छा अच्छा खाना सबको खिलवाया. डिस्क्राइब वॉट हैपेंड इन द फीस्ट. पार्टी में क्या हुआ, फीस्ट में क्या हुआ, उसको आपको डिस्क्राइब करना है इन योर ओन वर्ड्स. सो बदत्ता ऑर्गेनाइज्ड अ फीस्ट फॉर his 100 neighbors and served the most delicious food. Everyone got curious and asked him how he threw this feast, but he did not tell anybody. After asking again and again, Subhadatta started boasting the magical pot that was given by Yakshas as a reward for his hard work. He started dancing while holding the pot. Suddenly, the pot fell down and broke. He tried to collect all the pieces, but soon the pot vanished. सो क्या हुआ, पार्टी करी उसने 100 लोगों की जो उसके नेबर्स थे और उनको बहुत अच्छा खाना सर्व किया और सब हैरान थे कि इतना पुअर वुड कटर उसके पास इतना सब कुछ अच्छा खाना पीना कैसे आया. तो सब उससे पूछते हैं, वो पहले किसी को नहीं बताता है, फिर एट लास्ट जब सब इतनी बार पूछते हैं तो वो अपना मैजिकल पॉट लाता है, उन्हें दिखाता है और खुशी से डांस करने लग जाता है और इतने में उसका पॉट गिर जाता है और टूट जाता है और वो उस पॉट के पीसेस को कलेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में वो पॉट गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है. नाउ थिंक एन आंसर. What lesson do you learn from the story? Write in your own words. आपको क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से, क्या लेसन सीखा आपने? The lesson we learned from the story that we should not be greedy for worldly things, rather than we should focus on the things that will remain forever with us, like knowledge, wisdom, etc. So हमें क्या सीखा हमने, हमें लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन हमें क्या कोशिश करनी है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रह सकती है, जैसे कि समझदारी, एजुकेशन, नॉलेज. तो हमें ये सब चीज़ें गेन करनी है रादर देन मनी और रादर देन बीइंग अ ग्रीडी पर्सन. Thank you everyone for watching this video. I hope you have understood book exercise and question answers. If you have any questions and queries regarding it, ask me in the group in morning. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy and keep on studying. Exams are coming.